chanting and Abhishek, full of auspicious things did today and continuing. So I would like to seek blessings from assembled Vaishnavas. So I am not eligible to discuss this transcendental subject since Vaishnavas order and my progress. I am taking this opportunity to get some taste of bhakti. So we will start with Jai Radha Madhava. Yes, Prabhu, please. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yasoda Nandana Prasajana Ranjana. Yasoda Nandana Prasajana Ranjana. Yamuna Tira Vanajari. Yamuna Tira Vanajari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, आचार्य शील प्रभुपाद की जय. I am audible to everybody, Prabhuji? Am I audible? Yes, Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashtaprayestru Avatresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavadir Uttama Slohe Bhaktir Bhavadi Naishtihi Krishnaya Vasudevaya Devagi Nandanaya Cha Nandakobha Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Once again, I am welcoming all the assembled Vaishnavas and wish you a very happy Pandavan Rijal Ekadashi. So today we are going to read 8th chapter in Bhagavad Gita, Attaining the Supreme, Taraha Brahma Yoga. Chapter number 4, chapter number 8 and sloha number 4. We will read sloka. Adibhutam Sharo Bhava Purusas
चादिदैवतम् अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देहे पृतं वरा अधिभूतं शरो भावा पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देहा पृतं वरा अधिभूतं शरो भावा पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देहा पृथं वरा. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Oh, best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called Adibhuta, the material manifestation. The universal form of the Lord, which includes all the demigods like those of the sun and moon, is called Adideva. And I, the Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied being, am called Adi Yajna, the Lord of sacrifice. Purport. The physical nature is constantly changing. Material bodies generally pass through 6 stages. They are born, they grow, they remain for some duration, they produce some byproducts, they dwindle, and then they vanish. This physical nature is called Adibhuta. It is created at a certain point and will be annihilated at a certain point. The conception of the universal form of the Supreme Lord, which includes all the demigods and their different planets, is called Adidevata. And present in the body along with the individual soul is the super soul, a plenary representation of Lord Krishna. The super soul is called the Paramatma or Adiyajna and is situated in the heart. The word Eva is particularly important in the context of this verse because by this word the Lord stresses that the Paramatma is not different from him. The super soul, the supreme personality of Godhead, seated beside the individual soul, is the witness of the individual soul's activities and is the source of the soul's various types of consciousness. The super soul gives the individual soul an opportunity to act freely and witnesses his activities. The functions of all these different manifestations of the Supreme Lord automatically become clarified for the pure Krishna conscious devotee engaged in transcendental service to the Lord. The gigantic universal form of the Lord, called Adidevata, is contemplated by the neophyte who cannot approach the Supreme Lord in his manifestation as super soul. The neophyte is advised to contemplate the universal form or Virat Purusha, whose legs are considered the lower planets, whose eyes are considered the sun and moon, and whose head is considered the upper planetary system. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. तो हिंदी में अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। हम लोग 8वें का शीर्षक है भगवत प्राप्ति के 4थे श्लोक अध्ययन कर रहे हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तात्पर्य, यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है।
यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधिक कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसके पांव अधोलोक, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं, जिनका सिर उच्चलोक है। यस प्रभु। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Tashurun Militam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stabidam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadameyam Kadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sakrajatam Sagahana Raghunathan Vidam Tam Tachivam Satvaidam Savatudam Parijana Sagidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagahana Lalita Shri Visakan Vidam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Kopesa Kopika Kanta Radha Kanta Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhanu Sude Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpataru Evacha Kripa Sindhu Payevacha Paditanam Pavanepyo Vaisnavepyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Kadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bodhale Srimade Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasatya Desadarine Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chapter entitled with Attaining the Supreme. Very important chapter and important sloka. So, here, how to remember Supreme Lord at the time of death. This is the main question answered by Lord, whole chapter. Arjuna asked Lord how to remember Supreme Lord at the time of death. This is the question asked by Arjuna to Lord. Lord giving answer for this question, whole chapter. तो ये अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। अर्जुन ने इसके पहले वाले अध्याय में 8 प्रश्न किए थे अंत में, शुरुआत में, इसी अध्याय के शुरुआत के 2 श्लोकों में। और उसमें आखिरी प्रश्न ये था कि अंत समय में कैसे आपको जाना जाए, प्रयाण काले।
और उसी के उत्तर में ये पूरा अध्याय जो है कि कैसे भगवत प्राप्ति की जाए, अंत समय में क्या चेतना होनी चाहिए, ये पूरा अध्याय उसी के ऊपर है। Here, this particular sloka, Lord explains Adibhuta, Adidaiva, and who is Adiyajna. These three topic Lord explains in this particular sloka. तो श्लोक में जो 3 प्रश्न थे कि अधिभूत क्या है, अधिदैव और अधियज्ञ, अगर आपको याद हो ये 3 प्रश्न पूछे गए थे। 7वें श्लोक के अंत में आया था ये वार्तालाप, 30वें श्लोक में, 7वें अध्याय में, और इसको अर्जुन ने पहले 1 और 2 जो श्लोक हैं इस अध्याय के 8वें अध्याय उसमें पूछा था, तो उसी का उत्तर आज के श्लोक में दे रहे हैं भगवान। Actually, this whole chapter will be divided 5 sections. 8.1, 1 to 4, first 4 slokas, Krishna's answer to Arjuna's questions, and second section, sloka number 5 to 8, remembering Krishna at the time of death. तो ये And, पूरे yes, please. पूरे अध्याय को 5 भाग में विभाजित किया गया है, 6 भाग में। तो पहले 1 से लेकर 4 जो प्रश्न है, श्लोक हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पहले और दूसरे वाले श्लोक में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और 5 से 8 श्लोक जो हैं वो कैसे भगवान को अंत काल में याद किया जाए, उसके बारे में स्मरण किया जाए, उसके बारे में बता रहे हैं। And third section, remembering Krishna, practice remembrance through meditation. 9th sloka to 13th sloka. And 4th section, pure devotional service, remembrance of Krishna through bhakti. That is 14 slokas to 16 sloka. Then final, comparing the material and spiritual worlds and glories of supreme abode. That is 17 sloka to 22 sloka. और 9 से 13 श्लोक जो है कैसे भगवान को विभिन्न उपायों से कैसे उनको स्मरण किया जा सकता है, जैसे कि कवि लोग करते हैं या जो योग मिश्र भक्त होते हैं वो लोग करते हैं। और उसके पश्चात किस प्रकार से 14 से 16 श्लोक में जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को कैसे स्मरण करते हैं, किस उपाय से, वो उसमें बताया गया। और 17 से 22 श्लोक जो है इसमें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का तुलनात्मक दृष्टिकोण दिया गया है। So, common theme of this whole chapter is understanding Krishna through proper inquiry. Like Arjuna asking question to Lord, Lord is explaining to Arjuna about the Supreme Lord. So, understanding Krishna through proper inquiry. और क्षमा करेगा, आखिरी के जो 23 से 28 श्लोक हैं, आखिरी जो भाग है 6वां भाग, उसमें शुद्ध भक्ति की महत्ता को बताया गया है जिससे कि कृष्ण को प्राप्त किया जा सके। सॉरी प्रभु, कैन यू रिपीट प्रभु, प्लीज प्रभु, आई मिस्ड द पॉइंट। This whole 8th chapter we can understand like the understanding Krishna through proper inquiry. So proper inquiry, by proper inquiry we can understanding Krishna by example of Arjuna's question. उचित जिज्ञासा करते हुए कैसे भगवान को जाना जा सकता है, यही पूरे इस अध्याय में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं। Arjuna asked 8 questions from first and second slokas, and 3 and 4 slokas Lord gave answer for first 7 questions. Total 8 questions from first and second sloka. 7 questions answered by Krishna, Lord Krishna, in 3rd and 4th slokas. That is Brahman, spirit, instructible living entity; Adhyatma, controller of the body; eternal nature, the self, to serve the supreme; Adhyatma, karma, work and fruitive activities, activity which generates a material body for the living entity;
Adibhuta, the material manifestation, constantly changing physical world. Adideva, the supreme demigod. This is fifth question. The universal form, which includes all demigods and their different planets. And sixth question, Adiyajna, the enjoyer of sacrifice, Paramatma, in every embodied being, Krishna himself. And seventh question, where does Adiyajna reside? In the heart of all living entities. So total 7 questions. Brahma, Adhyatma, Karma, Adibhuta, Adideva, Adiyajna, and where does Adiyajna resides? These all 7 questions answered by Krishna. तो यहाँ पर जो 8 प्रश्न पूछे गए हैं सबसे पहले 1 और 2 श्लोक में, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे चौथे श्लोक में प्रथम 7 श्लोकों के उत्तर दिए, और 8वां जो प्रश्न था जो आज हमने अभी चर्चा की पहले भी प्रभु से सुना हमने कि कैसे अंत समय में भगवान को जाना जाए प्रयाण काले समय में, तो उसको पूरा अध्याय जो बाकी श्लोक हैं 5वें श्लोक से लेकर के वो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो 7 श्लोक में 7 जिज्ञासा थी पहले 2 श्लोकों में कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत जो सभी जीवात्माओं को नियंत्रित करने वाले जो सिद्धांत हैं और जो भौतिक जगत को नियंत्रित करने वाले, अधिदैव जो देवताओं को नियंत्रित करने वाले, और अधियज्ञ जो यज्ञ के पति हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया कर्म के बारे में, और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के बारे में, और कैसे ये जो अधियज्ञ हैं वो हमारे शरीर में कैसे इनको हम जान सकते हैं, शरीर में कहाँ पर ये रहते हैं, किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। और 8वां प्रश्न था वो प्रयाण काल के समय में कैसे भगवान को जानते हैं। तो 7 प्रश्न के उत्तर तीसरे और चौथे श्लोक जो आज का श्लोक इसमें दिया जा रहा है, और बाकी 8वां जो प्रश्न था उसका पूरा अध्याय उत्तर है। Yes, now we see this particular sloka in detail. This particular sloka, Lord explains 3 topics: Adibhuta, Adideva, Adiyajna. Adibhuta is material nature. The material nature is going through 6 type of changes. 6 type of changes will be happen in material nature, and it will keep on changing. Material nature consists Panchapudam and 3 subtle elements: mind, intelligence, ego, are called external energy of Lord. This Adibhuta is material nature. All material nature will be going through 6 type of changes, and it will keep on changing, and it will consist Panchapudam, 5 Panchapudam and 3 subtle elements of mind and intelligent ego. This is called eternal energy of Lord. Lord explains the same thing in 7th chapter 4, sloka number 4. Pumirabo nalo vayu kammano buddhir evacha ahankara idiyam me binna prakritir astada. तो आज के श्लोक में चौथे श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वो जो अधिभूत और अधिदैव और अधियज्ञ का उत्तर दे रहे हैं। तो बता रहे हैं कि अधिभूत क्या है, भौतिक अभिव्यक्ति क्या है, वो निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति जो है वो अधिभूत कहलाती है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तन होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से गुजरना होता है, और 7वें अध्याय के चौथे श्लोक में भी भगवान इस प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये 8 तत्वों से 5 जो पंचभूत हैं और 3 जो सूक्ष्म तत्व हैं इसके द्वारा ये वर्णित है, और ये निरंतर परिवर्तनशील है। वो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि वो उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, और अंत में क्षीण होते हैं, और अंत में उनको विलुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के 6 प्रकार से परिवर्तनशील है ये भौतिक प्रकृति। Then Adidaivam,
33 crores of demigods and their planets, and Brahman, marginal potency of Lord. That is living entity. Brahma means living entity, which is marginal potency of Lord, and internal potency of Lord is Adi Devam, and Adi Atmam is living entity's position, and Karma is activities of living entities. These all are, yes Prabhuji, yes. सॉरी तो अधिदेवम जो यहाँ पर बताया जा रहा है विशेष रूप से जो 33 कोटि देवता हैं, जो आंशिक विस्तार है, इन सभी को यहाँ पर, इन सभी के स्वामी, इन सभी को नियंत्रित करने वाले जो भगवान है, भगवान ने कहा था कि जो आप ही समझो कि मैं ही हूँ, मैं इनको नियंत्रित करता हूँ, ऐसा बताया 7वें अध्याय के अंत में। तो ये अधिदेवम की बात की जा रही है। और उसके बाद कर्म के बारे में बता रहे हैं प्रभु जी। कर्म जो है, जो कर्म विशेष रूप से जीव जो है वो इस एक शरीर के पश्चात दूसरे शरीर में देहांतर होते रहते हैं इस कर्मों की श्रृंखला के द्वारा। So all these energies of all like Adibhutam, Adidevam, Brahmam, Adhyatmam, Karmam, everything manifested by Lord, Supreme Lord, and is controlled by Supreme Lord. So without Lord, it will not work. All these potencies emanated from by Lord and controlled by Lord, and it will not work without Lord. The 7th chapter, 7th sloka, Lord explained this very clearly. Mata parattaram nanyat kinchit asti dhananjaya mayi sarvam idam protam sutre maniganaiva. O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. So Lord clearly explained all the energies emanated from him, and everything controlled by him. Everything work under his supervision. तो यहाँ पर भगवान जो है उनसे ही सब कुछ उद्भूत होते हैं, वही स्रोत है सबके और वही सबके नियंता भी है। जैसा कि 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया, भगवान कहते हैं कि जैसे सभी मोतियां होती हैं, मोतियों में जो धागा होता है, उस धागे की वैसी सारी मोतियां जुड़ी हुई दिखती हैं, नहीं तो अगर धागा निकल जाए तो सारी मोतियां बिखर जाती हैं। उसी प्रकार से ये पूरा जो प्रकृति सृष्टि और ये सारे जो यहाँ पर शब्दों का वर्णन किया गया है, जो परिभाषा बताई गई है, अधिदेवम, अधियज्ञम, अधिभूतम, ये सब कुछ के स्रोत और सबके नियंता भगवान स्वयं है। उनसे बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। Here Lord explaining what is spiritual, material manifestation, what is spiritual and material manifestation, and material manifestation, how to create it and how to maintain and how to destroy. और यहाँ पर भगवान आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बारे में वर्णन कर रहे हैं, कैसे भौतिक जगत का सृष्टि कैसे होती है, कैसे पालन होता है और कैसे उसका नाश होता है, संहार कैसे होता है। So through this chapter, if we are intensely, we are deeply reading this whole chapter, we can easily understand about the temporary material nature and permanent spiritual world. Once we understand this topic well, then we can utilize that knowledge while leaving our body. तो अगर ये ज्ञान हम समझ लेंगे भौतिक जगत का सृष्टि से लेकर के संहार तक का, और कैसे इसका संबंध जो यहाँ पर सभी जीव हैं, अधिभौत जो भूत हैं, अधिभूत, उनका सब जीवों का भी संबंध, तो फिर ये शरीर छोड़ते वक्त और कैसे भगवान चेतना से युक्त होना है, ये हम समझेंगे। Spiritual life or Krishna conscious life means
how to detach from material life. तो कौन से जो भावनात्मक जीवन है, इसका अर्थ है कैसे भौतिक जीवन से छुटकारा पाया जाए, कैसे इससे विरक्त हुआ जाए. And another aim of this spiritual life is anugulyena Krishna anusilanam. Anyabhlashida sunyam jnana karmadi anavriddham anugulyena Krishna anusilanam bhaktir uttama. When first devotional service develops, one must be devoid of all material desires. Knowledge obtained by monistic philosophy and fruitive action. The devotee must constantly serve Krishna favorably as Krishna's desire. So, this is another aim. When spiritual life, first point is detached from material life and serve Lord as per his desire. Please Lord. We have to serve Lord to please him. That is Bhakti Rasamrita Sindhu. Anugulyena Krishna Anusilanam. How to please Lord. This is the main aim of our spiritual life. और तब हम ये समझ पाते हैं, जब प्रभु ने बताया कि किस प्रकार से अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो बाकी अभिलाषा है इस जगत के प्रति, वो शून्य हो जाती है, और ज्ञान कर्मादिनावृतम, जो निर्विशेष ज्ञान है और जो सकाम कर्म है, उन दोनों से भी विरक्ति, और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के अनुकूल भाव से अनुगत्य में की गई जो भक्ति भाव की सेवा है, उसके द्वारा ही ये अवस्था प्राप्त होती है. For this, first we have to understand the characteristics of material world and what we are doing in this material world. We have to clearly understand what we are doing in the material world and need to observe the characteristic of material nature fully. तो उसके लिए भौतिक जगत को जानना भी बहुत आवश्यक है कि इसके क्या लक्षण है, कैसे ये कार्य करता है. Like a spirit is characterized by changeless, and matter is characterized by keep on changing. These two is very important. Spirit is characterized. Yeah. Yes, bro. जैसे कि जड़ पदार्थ जो हैं वो विनाशी हैं और जो चेतन हैं वो अविनाशी हैं. 9th chapter, 10th sloka, Lord says about material nature. Maya dakshena prakriti suyade saracharam hetunanena kaunteya jagat vibarivartade. This material nature, which is one of my energy, is working under my direction. O son of Kundi, producing all moving and non-moving beings under its rule. This manifestation is created and annihilated again and again. This is the characteristic of material nature. तो 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं किस प्रकार से भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है, और ये सारे जो जड़ और चेतन है वो भगवान की अध्यक्षता में ही वो पूरा उनका जो श्रृंखला है जो चलती रहती है, उनका क्रमांक वो भगवान के निर्देशन अर्थात अधिष्ठा में ही होता है. तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भौतिक जगत पूरा जो है वो भगवान के नियंत्रण में है. And we have to understand about the spiritual. In Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 10th chapter, 6th sloka, Muktir hitva anyata rupam swarupena vyavasthiti. Liberation is the permanent situation of the form of the living entity after he gives up the changeable class and subtle material bodies. Second canto, Prabhuji. Yes, प्रभु जी. दूसरे स्कंद में बताया गया मुक्ति के बारे में कि मुक्ति जो है वो हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर को त्याग करके जब जीवात्मा
बिल्कुल इससे निर्मुक्त हो जाती है, तब वो अपने स्वाभाविक स्थिति में जब आती हैं उसको मुक्ति अवस्था कहा जाता है जीव का। This is the benefit of spiritual path. When we are in fully devoted to Lord, then we will go to Lord's abode. और तब जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब हम भगवान के प्रति जब पूर्ण भाव उत्पन्न होता है शरीर में सेवा का, तब भगवान के धाम जा सकते हैं। So now we will come to next portion of this sloka. Lord's multiple energies one energy will control another energy. Like Lord's external energy, Maya, material nature, will be, sometimes it will control Lord's marginal potency. Large marginal potency means living entities. When Maya controlled living entities, then living entities think, I am the body. And when living entity is thinking, I am the body, then whole thought process of living entity will be a different way, like a material way. It will think like all demigods are independent and they are doing, without any dependent, they are doing all their own. Such a misconception will arising because of bodily platform, because they are thinking their body by Maya's control. So they will think a different way against spiritual path. तो दूसरा जो भाग है तात्पर्य कि भगवान की जो शक्तियां हैं किस प्रकार से कार्य करती हैं, भगवान की जो पराशक्ति है वो पराशक्ति को नियंत्रित करती है। इस प्रकार से बताया गया यहाँ पर, जैसे जब जीव समझते हैं कि वो चेतन जीवात्मा है तब वो शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जब वो अपने आप को ही शरीर मानते हैं तब फिर कठिनाई शुरू हो जाती है। So we even not only living entities in the earthly planet, in the heavenly planet also, this Maya playing with the heavenly planets, demigods. Like Indra, we can take example to Indra. Indra is thinking, I am the king of heaven, and I am controlling all my kingdom, and I am providing rain to the living beings, and through my rain only they are sustaining. Like, this is misconception Indra got through Maya. Maya attacked him, and he was thinking, I am controlling and I am giving rain, and he is expecting from living beings for yajna, because he also, in Shastra says, he also yajnapati, and Lord Supreme Lord also yajnapati. But there are difference between both. But he is thinking, I am the yajnapati. People need to do yajna for me, and I will provide rain to them. तो ये जो नियंत्रित करने की भावना है वो खाली इसी जगत में नहीं, मतलब इसी लोक पर नहीं, ऊपर के लोकों पर भी पाई जाती है। जैसा कि प्रभु ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया इंद्र का, किस प्रकार से इंद्र जब उस समय बरसात कर रहे थे वो वृंदावन धाम में भी, तो वो सोच रहे थे कि मैं ही इसको नियंत्रित करने वाला हूँ, और यज्ञ इस बार मुझे नहीं दिया गया। वहां से वृंदावन के वासी लोग मुझे प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नहीं किए, क्योंकि यज्ञपति उनको भी कहा जाता है, लेकिन अंततः यज्ञपति भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण है, यज्ञों के स्वामी वही हैं। लेकिन उनको लगा कि मेरी सेवा में इन्होंने त्रुटि की है और इनको मैं नियंत्रित करता हूँ। वो भूल गए कि भगवान सबको नियंत्रित करते हैं, और उन्होंने फिर वो बारिश करना शुरू किया। He was thinking living entities should worship me,
If they they are not worshipping, then I will not give anything. So I wanted to prove my power to them. It was happened. Even he forgot. Lord, Supreme Lord took a birth in the material world, and he was playing in the Vrindavan with the covered voice, and his lotus feet was roaming around in the Vrindavan village. He doesn't know, he forgot. And in the Govardhan Leela, Lord did this Govardhan Leela to teach Indra about his position. तो इंद्र ये भूल गए थे, उनको स्मृति हो गई थी, विस्मृति की किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस समय वृंदावन धाम पर लीला कर रहे हैं वो, और ब्रजवासियों के साथ में उनके चरण कमल इस समय पूरे ब्रज में वो उनके चरण कमल का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये भूल करके, ये विस्मृति करके वो उनको एक साधारण बालक समझ करके, और उन्होंने इस प्रकार से ये जो अपने शक्ति का प्रयोग था वो करने का साहस किया। So Lord teaching to Indra as well, he instructed us to live depending on land, cows, bulls. So that Vrindavan economy, like both side Lord's teaching. तो यहाँ पर भगवान ने इंद्र के माध्यम से हम सबको भी शिक्षा दिया इंद्र के द्वारा कि कैसे हम लोग का जीवन जो है विशेष रूप से सादा जीवन जो होना चाहिए उच्च विचार के लिए, वो भूमि, गाय और जो बैल हैं, गोधन, इनके ऊपर आश्रित होना चाहिए। We can understand about village economy, like Vrindavan economy, by modern age factories. We can compare both. The modern age, so many factories are functioning, and because of factories, whole country and even whole world getting polluted, environmental fully destroyed, and global warming is arising. There is no proper timing, the rain is not in a proper way, and there is no water. People are destroying forest for greedy, and everywhere there will be a problem. Farmers are struggling to produce rice, vegetable and cereals, and they are also protesting against government. So these are we are witnessing in the latest technology are implementing in all department, all the sectors, latest technology implementing, but the problem is arising one by one. तो प्रभुपाद जी कह रहे कि आधुनिक समय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो इतने नए नए संसाधन उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, और भूमि और गो रक्षा या गो पालन इसको छोड़ करके और तरह तरह के कृत्रिम रूप से ये कारखाने और इस प्रकार की चीजें जो उग्र कर्म है उस पर युक्त हो रहे हैं, और उनको लगता है कि इससे जीवन की समस्याएं समाधान होंगी, जीवन थोड़ा उत्तम होगा। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि इसके वजह से कई समस्याएं और उत्पन्न होती जा रही है एक के बाद एक। We have to please Lord by Vrindavan style of life. If we are doing Vrindavan style of life, then we can solve all the economic problem. We can live self-sustained life by satisfy the Lord. तो हम लोग को वृंदावन का जीवन शैली जो है वो अपनाना होगा भगवान को पसंद करके। वृंदावन की जीवन शैली भगवान को बहुत प्रिय है, जो कि भूमि और गो सेवा पर आधारित है। तो उनके ऊपर आधारित जो जीवन है वो भगवान को बहुत प्रिय है, और इसी के द्वारा भगवान को पसंद करने का प्रयास कर सकते हैं।
Adibhuta, material nature, controller of material nature, and controller of 33 crores demigods, and ultimate enjoyer of all yagyas. So, he is the Supreme Lord. When the Yagyapati fully satisfied, then today's social and economic and political problems will be easily solved, very easily. तो इस प्रकार की जो आर्थिक व्यवस्था है उससे सभी का समाधान हो सकता है। तो आजकल की जो आर्थिक समस्याएं दिखती हैं आर्थिक उन्नति की, वो सभी का समाधान इससे हो सकता है। If you are not satisfying Lord and taking all the people towards hell, we cannot bring any welfare to anyone at any cost. If you are building so many factories, producing, whatever you are producing by batteries will not be sufficient. And producing fastest rain, cars, whatever we are preparing, whatever we are creating through latest technology will not give a solution, because finally, ultimately, people will struggle for food only. Food is basic. All other things are luxury life only. That is very not required, or basically not required all other latest technologies, facilities. Basic things is food. We are creating all these things, but finally, the food will be not sufficient for living beings. तो यहाँ पर प्रभुजी बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये आधुनिक जो जीवन शैली है, जो आधुनिक उन्नति, आधुनिक समाज है, वो किस प्रकार से अलग दिशा में जाने का प्रयास कर रहा है, जहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजों के पीछे लोग अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं, शक्ति और समय जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। इस जीवन में सबसे आवश्यक है ये अन्न की प्राप्ति करना, जो अन्न है मतलब अन्न मिलना जीवन के लिए। और वो तो जो बताया गया पहले, जो वृंदावन का जीवन शैली है कि किस प्रकार से भूमि और गाय के द्वारा वो बड़ी आसानी के साथ उससे सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती है। दूसरी ओर लोग जो प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार से बड़े बड़े कारखाने बना करके और लोगों को उग्र कर में लगाना, जिससे लोगों का जीवन नरक की ओर जाने वाले हैं, तो इससे न तो उनकी उन्नति होगी और न तो से भगवान प्रसन्न होंगे। So, if you are worshipping cows and bulls, Lord, Supreme Lord will be pleased. And when cultivation, farming develop, then Lord Baladev will be satisfied. If both Lord Krishna and Baladev satisfied, then everything will be flourished. And we can change the situation. Now, current situation is all the living, all the people, they are like animalistic life. They are living as animalistic life. So we can change the situation. Now, the current situation we can change if we are worshipping cows and bulls, and if we are doing wonderful farming to satisfy both the Lord Krishna and Baladev. They are happy, then everything will be changed and blissful life can lead by people. यहाँ पर बहुत ही सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रभु जी। कैसे अगर हम गाय की सेवा करेंगे तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे, और भूमि माता की सेवा से बलराम जी जो हलधर हैं वो प्रसन्न होंगे, और जब कृष्ण और बलराम प्रसन्न होंगे तो फिर सबका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा, वो सबके लिए आनंद का विषय होगा। लेकिन उसके अलावा अगर हम कुछ और भी करने का जो प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार से जो तथाकथित आधुनिक समाज के जो कार्य हैं, ये कारखाने और इस प्रकार की जो फैक्ट्रियां उग्र कर्म युक्त होना, और जिससे कि हमारी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जो हमें चाहिए इस मनुष्य जीवन में जीने के लिए, विशेष रूप से अन्न और दूध, वो प्राप्त नहीं होंगे। और विशेष रूप से बताया जो कृष्ण बलराम अगर प्रसन्न नहीं होंगे तो बाकी हमारा सारा प्रयास जो है विफल हो जाएगा।
And when we are doing this thing, and Prabhupada also always insisted for farm community. So based on these cows, bulls, and farming land, these three things only, mainly focusing on farming land and farm community. So who knows this philosophy, and along with this they are taking serious about chanting the holy name, definitely they will lead a peaceful and blissful life in this material world. Nothing will affect them. तो इस प्रकार से गाय, बैल, जो गोधन है और भूमि माता, इस प्रकार से अगर इनकी हम सेवा में युक्त होते हैं तो बड़ी आसानी के साथ, बहुत सहजता से वो बहुत एक शांतिपूर्वक जीवन जो आध्यात्मिक और उन्मुख कर सकते हैं। अगर वो भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए ऐसा जीवन व्यतीत करें तो ये सबसे अनुकूल जीवन है भगवान कृष्ण और बलराम को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। So people are living in the farm community without harming Bhumi Mata and worshipping Lord in a proper way by regulating our principle and following footsteps of our acharyas and chanting the holy name, then automatically they doing this thing in whole life, then automatically they will think about the Lord at the time of leaving the body. Even if they are struggling any healthy issues at the time of leaving the body, Lord will make them to think about Lord while leaving the body. Lord himself says this. Sorry, Prabhu, who says this? Yeah, Lord himself, he says this. I will make them remembering them about me while leaving the body. तो इस प्रकार से अगर कोई अपना जीवन व्यतीत करते हैं भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए, पवित्र नाम का, और इस प्रकार से जो वर्णाश्रम प्रणाली है विशेष रूप से जहाँ पर भूमि और गाय के ऊपर आधारित जो गो कृषि है, गो के ऊपर आधारित कृषि, तो इस प्रकार से अगर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को प्रसन्न करने के उद्देश्य हेतु भूमि माता का शोधन नहीं करते, मतलब उनको उनका शोषण नहीं करते वो, और बहुत ही शुद्धता के साथ ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है। और इसीलिए उनको अंत में निश्चित रूप से भगवान का स्मरण होता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसे भक्तों के लिए मैं स्वयं उपलब्ध रहता हूँ उनको स्मरण करने के लिए। Yes, it is the wonderful day of Paramananda Ekadashi. Almost all our Vaishnavas doing lot of austerity, chanting so many rounds, and whole our community is enjoying the bliss of Lord's potency, and we will pray to Lord to get progress. All our community, our congregation will be getting flourish coming days, and we have prayed to Lord for coming July 1st Radha Yatra will be happen. We will pray to Lord, so many new devotees can come and attend the Radha Yatra, and we will get some new devotees through the program. We will pray to Lord, and I will stop here, Prabhuji. So if any questions and comments or points we can discuss, Prabhuji. तो यहाँ पर प्रभु जी विराम देते हैं और सभी को बधाई दे रहे हैं कि आज हमने बहुत सुंदर रूप से ये आज का दिवस हम सभी ने मिल करके यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जो है महामंत्र विशेष रूप से हम सब ने जप किया पवित्र नाम का, और कई सेवाओं में युक्त रहे सब साथ में मिल करके। तो प्रभु जी कहने के निश्चित रूप से हम सब प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हम सबको इस प्रकार से
और कृपा मिलती रहे, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे, जिससे हम लोग और उनकी सेवा में युक्त होते रहे साथ में, पूरे यात्रा के साथ में। तो यहाँ पर प्रभु जी विराम देते हैं। बहुत सुंदर प्रवचन आज का, आज के विषय वस्तु पर, और विशेष रूप से पूरा जो आज का फोकस था, मुख्य केंद्र बिंदु ये था कि किस प्रकार से एक सादा जीवन व्यतीत किया जाए जो भूमि और गौ माता के ऊपर आधारित हो, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, और वो हमको भगवान का स्मरण करने में बहुत अनुकूल होगा। जो यहाँ विषय वस्तु आ रहा है कि कैसे अंत समय में भगवान को स्मरण किया जाए, तो इस प्रकार का जीवन सदैव भगवान को स्मरण करने के लिए जो वृंदावन का जीवन है, जो उन्होंने बताया कि कैसे वहां पर लोग का जीवन शैली जो है वो बहुत अनुकूल है। तो किसी कोई भक्ति कोई जिज्ञासा अगर है, कोई किसी का कोई टीका टिप्पणी, तो आप अपने हाथ उठा सकते हैं।